Hello, my dear students. I am Ms. Kavya Komatwar, and my qualification is MSc B.Ed Organic Chemistry, and I am going to teach you science and mathematics subject. We are going to give you the best education through online platform, and we are going to teach you all the aspects of education by this platform. Welcome to Freedom Classes. So let's start with the first class, that is your first chapter of science, that is gravitation. So let's write. Our first topic is gravitation. Before this, we want to recall the points which we have studied in the previous class, that is in 9th standard. So I'm going to list the points here. मतलब मैं यहाँ पे कुछ points लिखूंगी जिससे आपको आइडिया आएगा कि हम ग्रेविटेशन में क्या पढ़ने वाले हैं. So let's start. So the first point is what is force. Second point is what is universal force. The second point is what is universal force. Third point is what is motion. So I have written all the 3 points. पहला है force, second है universal force और third है motion. इन 3 पॉइंट्स में से हमें पहला देखना है फोर्स. सो लेट्स सी व्हाट इज फोर्स. अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज व्हिच कैन ब्रिंग द मोशन. बिकॉज ऑफ फोर्स, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, देन ओनली मोशन कैन टेक प्लेस. यस, व्हाट इज फोर्स? अगर हम किसी चीज को मूव कर रहे हैं और वी आर ब्रिंगिंग सम मोशन, देन वी आर अप्लाइंग सम फोर्स और वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स. नेक्स्ट, यूनिवर्सल फोर्स. Now this universal force is only called as gravitation. Gravitation को ही हम universal force बोलते हैं. That force is between two objects. किसी भी दो ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल्स को जो अर्थ पे है या यूनिवर्स में है, उन दोनों के बीच में होगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट we'll see what is motion. Now motion, as you all know very well, that it is just the change in position. If you take a position, that is called your initial position, and if we are moving that object to some distance, okay, then from the initial and your final position, the distance covered in a specific time in some direction, it is called as motion. हमने अभी फोर्स देखा है, यूनिवर्सल फोर्स देखा है, यानी कि ग्रेविटेशन देखा है और मोशन देखा है. तो आपको अलग अलग टाइप के मोशंस तो आपको पता ही होंगे. How are the types of, or what are the types of motion? It can be in a circular path. It can be in a circular path. और इसके बाद it can be in a curvilinear. It can be in a curvilinear path, means not straight, सीधा नहीं होगा वो. It can be in the form of a curve. ओके, एक मोशन जिसका पाथ अगर हम कवर करेंगे तो वो हमें कर्व के फॉर्म में दिखेगा, उसे हम बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन. नेक्स्ट, रेक्टिलिनियर पाथ और मोशन. ओके, सो दीज आर डिफरेंट पाथ्स, and along with that you have to study this too: motion, force and universal force. So this all you know very well. So let's see what is next. After studying, we are directly going to see gravitation. We are directly going to see the gravitation chapter. Now let's start gravitation. You can note this down in your notebook and then we shall start the definition. So gravitation, it is the force which acts between the two objects or two particles in the earth surface, or it can be in the universe, means outside the earth surface, means it can be in the outer space, right? Let's write. Suppose I take a mass, I take a body which has the mass m1. इस बॉडी का मास m1 है और हम उसे कुछ ही डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है, और उस बॉडी का मास है m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमने r ऐसे कंसीडर किया, आप कैपिटल R ले सकते हो या स्मॉल r ले सकते हो, इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस मेजर किया और
ये दोनों के मासेस है, और अगर हम देखेंगे कि ये दोनों अर्थ के सरफेस पे है, यानी कि अर्थ इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस टू ऑब्जेक्ट. Earth has a property to apply or exert a force on these two objects so that it will be staying at rest on the earth. वो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, यानी कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. अगर वो नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, सो इट कैन फ्लाई और इट विल बी नॉट ऑन द अर्थ सरफेस. राइट, सेम जैसे हमने m1 को देखा है, वैसे ही हम m2 मास देखेंगे. ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी टू बॉडीज में, भले ही वो नजदीक हो या दूर हो, दोनों भी केसेस में हमें अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा. यानी कि एक बॉडी, यानी कि फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी पर भी फोर्स अप्लाई करती है, उसे एज अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है, और ये दूसरी बॉडी भी इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है, एक्सर्ट करती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन. और दूसरी चीज जो अर्थ के सरफेस पे, द अर्थ exert a force on this object also, and also on this object, and also on every object present on the earth, that is called as gravitation. Now we have seen what is gravitation inside, or you can say on the earth's surface. Now we have to go one step ahead, that is outside earth's surface, यानी कि outer space में. अगर आउटर स्पेस की हम बात करें तो वहां पे आएंगे प्लैनेट्स, फिर सन आएगा, वहां पर रेवोल्यूशन आएगा, ऑर्बिट्स आएंगे. ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. वी वेरी वेल नो दैट सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स एट डिफरेंट ऑर्बिट स्टार्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन with some specific speed and in specific direction. Now look at the shapes of all the planets and sun. It is round in shape. Okay, it is round in shape, or it has a peculiar shape. Now because of this shape and particular mass, also these two bodies in the universe can apply force. Yes, and that force is called as gravitational force. So on the earth surface as well as in your universe, हर जगह पे आपको gravitational force देखने को मिलेगा. ठीक है, अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है. And the well-known scientist, which is the greatest scientist, called Sir Isaac Newton. He was a well-known scientist, which is called as Sir Isaac Newton. He brought this concept of gravitation. Suppose, let's recall what he has discovered. What happened in the history? Let's recall it. Once he was sitting on a place and he saw an apple tree. And from that apple tree, the apple fruit fallen down on the ground with some speed, suppose. And when he saw that, why does this apple fruit from the apple tree falls on the ground? Do you have any idea? He also gave a thought. He considered that, or he was in a thought that why it has only come in a single direction from the tree. Suppose I draw here. Suppose from this tree, it has fallen down from the to the ground. Why it has only come in a vertical direction in this way? Why not in a horizontal direction, or why not at a inclined plane? This is your vertical straight direction and this is your inclined direction. Okay, means it is not straight, this is straight direction and it is inclined. This is straight to your ground and this is inclined to your ground surface. So he has seen that the fruit has fallen in a vertical direction and not in the inclined direction or plane. Why this is so? Because the gravitational force always acts in a single direction, or you can say it will be in a vertical direction. It doesn't